Hi friends, welcome to my YouTube channel CA Joyam, and we will discuss today the newly added clause 44 in the tax audit report form 3CD, which is very important and applicable from financial year 21-22. Go through it, especially the PowerPoint slides, and get back for any clarification. Hi friends, today we will discuss the newly introduced clause 44 of the tax audit report under form 3CD. This was kept in abeyance up to 31st March 2022, मतलब 31 मार्च 2022 तक इसको लागू नहीं किया गया करंट कोविड सिचुएशन के कारण, पर यह लागू है 1 अप्रैल 2022 से। मतलब वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है। The due date of this tax audit is 30th September 2022। मतलब अभी ऑडिट का प्रेशर वाला टाइम चल रहा है सब सीएस और क्लाइंट्स पे। क्लाइंट्स को वैसे भी कोई प्रेशर नहीं होता है। नाउ आई वाज स्टैंडिंग अ बिट, कुछ पीछे काम चल रहा है तो मैं बोला रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, आपको भी एक अलग वैरायटी मिलेगा। नाउ फ्रॉम Income Tax Act 1961, compulsory audit was required in cases of clients having turnover of more than 1 crore. This limit was increased to 5 crores, but the catch was 95% of the turnover should be only through account pay or digital transactions। मतलब सिर्फ 5% कैश अलाउड था टर्नओवर में, 95% टर्नओवर आपका डिजिटल या वाइट में होना चाहिए अकाउंट पे में। दिस वॉज इंक्रीज टू 10 crores इन द लास्ट फाइनेंस बजट ऑफ 2021। नाउ क्लॉज 44 क्या है? मैं मेरा स्पीच कंटिन्यू करूंगा इन पिप बिलो द प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बट क्लॉज 44 आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, why the government is hell bent in increasing the compliance। दो तीन चीजें हैं। जो क्लॉज 44 है वो जीएसटी रिलेटेड है। टोटल एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच जीएसटी हैज बीन पेड, एग्जेम्प्ट डीलर्स को कितना दिए, कॉम्पोजिशन डीलर्स को कितने दिए, ये 3-4 उसमें सब कॉलम्स दिया है। पर ये सब डेटा जीएसटीआर 2A 2B में मिल जाता है गवर्नमेंट को। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फॉर्म 26 AS को अपग्रेड कर दिए, मोर देन 50 ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड। सो व्हाट इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट इन कंप्लाइंग इट विथ एंड पुटिंग दिस इन फॉर्म 3CD ऑल्सो। अब ये एक कंबरसम प्रोसीजर है जो कि टैली में मेंटेन करना क्लाइंट्स के लिए डिफिकल्ट है, तो वो हमको रॉ डेटा देके जाएंगे। आई एम स्पीकिंग एज अ सीए, तो हमको और कंप्लायंस बर्डन करना पड़ेगा। फीस तो वैसे भी कोई देता नहीं है टाइम पे, जो नॉर्मल है वही नहीं देते, इसका एडिशनल फीस तो रूल्ड आउट है। तो ये क्यों डाला गवर्नमेंट ने, ये क्लैरिफिकेशन अभी बाद में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वी विल हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर। जैसे हम लोग लोन्स और एडवांसेस का सेक्शन 269S 269T है, जिसमें कैश लोन दिया गया या नहीं दिया गया, कितना आउटस्टैंडिंग है, ये सबके लिए एक डिस्क्लेमर देते कि ये सब इंफॉर्मेशन क्लाइंट से आ रहा है। पर ये क्लॉज में फॉर्म 3CD में कोई डिस्क्लेमर वाला लाइन डाल ही नहीं सकते, तो पूरा बर्डन सीएस पे क्यों आए? तो मेरे हिसाब से ये डिस्क्लेमर जाना चाहिए फॉर्म 3CA में, जो मेन पेज है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें जाना चाहिए। नीचे एक डिस्क्लेमर आप डाल सकते हैं, आप डाल दो ये सब कैलकुलेशन क्लाइंट से मिला है, बिकॉज CAs आर पेनलाइज 10,000 पर मिस्टेक इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। सो बी केयरफुल। नाउ clause 44 is a bifurcation of the GST elements of all expenses। Now all expenses means purchase, discounts given, salary, bonus, other items which are attracting GST। दिस इज देयर फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स को आपने कितना पेमेंट किया, तो मुझे कैसा पता आगे वाला कॉम्पोजिशन डीलर है नहीं है, मतलब वो इंफॉर्मेशन भी अभी एक सीए और क्लाइंट को रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो 3CD का क्लॉज 44 आप कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। So this I have broken it up into several sheets in the presentation,
go through it, you will have a hang of what exactly I'm trying to say. The rest of the small discussion I will have is with the PowerPoint slides one after the other. Thank you. Have a nice day. In continuation of my earlier speech, this is a detailed presentation of clarification towards newly introduced clause 44. This is regarding the GST paid on all expenses. Now the clarification expected is whether this is applicable to salary and bonus also. Now, under the Income Tax Act, a person is required to get his audited or turnover or books of accounts audited if the turnover is exceeding 1 crore or 5 crores with 95% account paid turnover and 10 crores now if the account paid turnover is 95%. The applicability of this clause 44 was held up due to COVID situation up to 31st March, and hence this is applicable now for the tax audit of financial year 21-22, the due date of which is approaching. And generally the details are available in GSTR 2A 2B, but still this is the table of clause 44 in the audit form 3CD which you have to follow. Look at the columns carefully. You have to mention the payment made to registered dealers, unregistered dealers and composition dealers, meaning this clause is applicable whether the SSC is registered under GST or not, and applicable for those also who are required to get the books of accounts audited under presumptive scheme of taxation. This is a very important explanation. Now, it may relate to goods and services exempt from tax, entities falling under composition scheme, registered entities and other entities, and expenditure relating to entities not registered under GST, which is very important clause. Now, one needs to give consolidated figures of all the expenditure under this clause, or you can choose to expand the column and give individual entries, which is going to be very cumbersome. Otherwise, there is no requirement to mention the serial number in this clause 44. Column 2, the total expenditure incurred during the year shall be considered, which means all expenses are to be considered on which GST is applicable. Whether salary and bonus is required to be included is to be clarified by the government. Regarding depreciation, as it is not a cash expense towards any supply inward, the same should not be included in the total expenditure. But again, a clarification will help to this effect to ease things in filling up the form 3CD. Now, two viewpoints. Expenditure should be disclosed as the heading does not say expenditure on supply. Rather, it states expenditure is to be disclosed. The main objective is to introduce this clause for matching figures with GST return, wherein non-supplies are anyway not included. Whether GST should be included? Yeah, the GST is a term used as total expenditure, which should include the GST. Hence, to my opinion, GST also has to be included in this clause 44 in column 2. Now, exempt services, expenditure in respect of entities registered under GST. This section has been further divided into 4 parts, which you can see: exempt, zero rated, taxable, composition dealers. And it may be noted that transactions which are not regarded as supplies are to be covered here, because that is also an expenditure and it is to be given for registered as well as unregistered dealers also. Details of value of inward supplies under composition scheme, exempt and nil rated supply are also required to be given by the chartered accountant. And expenditures that are neither exempted from GST nor incurred from the composition dealers, in effect it includes the normal supplies received from registered person. Expenditure incurred on inward supplies also is included.
Part D is column 6, total payment to registered entities. Incurred total expenditure to registered entities has to be mentioned in this. The quantum of total payments made to registered entities will not serve any purpose since the expenditure is incurred for any of the objectives. So you have to be careful in bifurcating the taxable entities and non-taxable entities, and I have given a calculation how to report these expenses and bifurcate for a GST registered person and expenditure in respect of entities not registered under GST, and this includes the expenditure incurred from the persons that are not registered under GST, attributed to GST registered entities and entities unregistered with GST. What if the books of accounts are not prepared? So you have to give a disclaimer क्योंकि CA पे पेनल्टी है, तो ऐसा डिस्क्लेमर का प्रोविजन 3CD में नहीं है पर आप 3CA में डाल सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में आप अपने तरफ से एक डिस्क्लेमर डाल दीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिला है वो क्लाइंट के तरफ से मिला है और हम टू बेस्ट possible judgment and determination as per policies laid down by Income Tax Act in clause 44 has been followed. The rest is up to the SSC. The onus of burden is on the SSC. ये disclaimer एक बार डाल दीजिए क्योंकि आपको पता नहीं क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बराबर है या आपको उस पर और वर्किंग करने की जरूरत है या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मैच्ड है या नहीं। मेरे मेल आईडीज फोन नंबर्स दिया हुआ है स्टार्टिंग में, आपको कुछ भी डाउट है यू कैन गेट बैक टू मी ऑन मेल, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।